A very good morning, all my dear students. I am Pallavi Dhole. Welcomes you all in this today's lecture of programming with Python. In the previous lecture, we have already studied the concept of decision making. That is, if statement, if else statement, and how it will be defined in case of Python programming language. Okay, so block of statements inside the if or the else part are basically intended by these spaces. Okay, means line and indentation properties will be included in the Python programming language. So it is a very simple technique, but very different from the previous languages. Okay, now in this today's lecture we are going to study the concept of nested if else structure, also the ladder structure of the if else in case of the Python programming language, and how it will be declared and how it will be defined and how it will be executed. Let us see one by one in detail. See, a Python else if and else statement. Okay, so here el means elif, this keyword is used for if else. ओके जो आपने else if जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना आप, जैसे नॉर्मली हमने प्रीवियस लैंग्वेजेस में if कंडीशन देन else if कंडीशन else if, ऐसे जो आप लैडर स्ट्रक्चर जो लिखते हो, in case of Python programming you have to use the keyword elif, elif, this keyword you have to use here. Okay, when if else if conditions will be occurred means जो ladder structure में else if की condition आती है, so that will be shortened here. So only you have to write elif, that is the else if statement. So this se will be removed and it will be make a keyword elif. तो यहाँ पर जो se जो keyword था वो remove कर दिया यहाँ से, और जो मतलब se लेटर्स रिमूव कर दिए और उसका कीवर्ड बन गया elif, that is else if. It is called as the else if. Okay, so the else if statement, so else if statement allows you to check multiple expressions for true and execute a block of code as soon as one of the condition evaluates to true. Means multiple conditions are there in case of if else ladder structure. तो जहाँ जहाँ पर if condition आती है तो वहाँ पर वो चेक करेगा कि whether this condition will be true or false, और अगर as soon as one of the condition evaluates true, सो इट्स रिलेटेड इट्स एग्जीक्यूशन जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. मीन्स आइदर और कंडीशन में कोई भी एक ही कंडीशन आपकी ट्रू होगी और उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द एल्स इफ स्टेटमेंट. सो इट इज़ कॉल्ड एज द इफ एल्स लैडर स्ट्रक्चर in case of Python programming language. Okay, see the similar to the else if statement is optional. Okay, it is optional. However, unlike else, for which there can be at most one statement, there can be an arbitrary number of else statement following an if. तो if के साथ में multiple else if statement रह सकते हैं and this last one else part will be optional. Okay, so everything is optional here, only if condition is permanent. Okay, you have to write it. अगर उसके बाद में else if का structure अगर लिखते हो आप तो लास्ट में जो else statement आता है that will be totally optional. Okay, so there is no need to write the. So see here the basic जो उसका syntax है. See, if expression 1 means nothing but your condition. You have to check the condition whether it is true or whether it is false. Okay, if it is true then statement s followed by this if will be executed. Okay, अदरवाइज इफ इट इज़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स इफ पार्ट में वो चला जाता है. देन इट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन 2 मीन्स अगेन कंडीशन 2 इज देयर. दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2. इफ इट इज़ ट्रू then statement s followed by else if statement will be executed,
and if it is false, then go to the next if else if part. Okay, so here occurs condition expression 3, so it is nothing but your condition 3. If it is true, then expression S will be evaluated, which is followed by else if part, and if it is false, then the else part will be executed with its statement. Okay, so in this way, the number of different else if part will be executed with the help of the different conditions. So it makes a if else ladder structure in case of Python programming language by using the keyword here else if, that is else if, ELIF. This is the most important keyword in case of the Python programming language. तो normally C, CPP, Java के अंदर if else if use करते हो आप, but this will be shortened with the help of this keyword. So SE, both character will be removed, and else if, that is ELIF keyword will be used for if else ladder structure here. Let us discuss the examples of the if else ladder structure. See, this is the example of the Python program with using the concept of else if. Okay, see, var 100, here var 100 means you are initializing the integer type value, so that's why it is automatically declared as a integer type data. Okay, then if var is equal to 200, so it is a first condition whether this variable var is equal to 200, means comparison between the two. So 100, so var is 100, so 100 is equal to 200. No, this condition is false, so false हो गई. So that's why this block of statement will be not executed and go to the else part. Okay, so here check, else if var equal to 50, your val is 100 but your data is 150 here, so both will be equal. No, here it is false. Okay, ये भी आपकी condition false हो गई. So that's why this block of statement is also not executed, and this will turn to the, and control will be transferred to the next else if structure. Then the third expression is there, third condition is there, var is equal to 100. Okay, so your variable value is 100, so 100 is equal to 100. Yes, now the condition becomes true here, true हो गई. So that's why this both statement will be executed. Print 3 got a true expression value and print the value of var. So your message on the console is this one, 3 got a true expression value and print var. तो var की 100 जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट होगी. एंड देन जो एल्स पार्ट है दैट विल नॉट बी अगेन इवेल्युएटेड, ओनली the condition in the third condition will be true. So that's why the third statement with respect to else if part will be executed, and last statement is the print goodbye. Okay, so after that 100 the goodbye will be printed. So let us check the output of the program, given program. See here, when the above code is executed, it produces the following result here. So 3 got a true expression value here, 100 and goodbye. So this is your output, because this third condition here true, यहाँ पर true आई, and this expression will be, means this block of expressions will be, block of statement will be executed, and the very last statement, that is print goodbye, which is not a part of this if else ladder structure. So that's why third statement, the statement related to third conditions will be executed, and then goodbye message will be printed on the console. So in this way, with the help of the line and indentation technique, your if else ladder structure will be implemented using the Python programming language. Next is the Python nested if statement, that is the nested if structure. Okay, means if के अंदर if part जब आप use करते हो, so that is called as the if else nested if structure. Okay, see,
There may be a situation when you want to check for another condition after a condition resolves to true. मीन्स कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू आती है लेकिन वो ट्रू होने के बाद में सम अनदर कंडीशन रहती है कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टेटमेंट, if you are giving the inner one if else structure, means if के अंदर if else part जब यूज़ होता है if condition and then if again और else part. सो ऐसे जब if के अंदर if else structure आप यूज़ करते हो, so in such a situation you can use the nested if construct, or such a type of statements are also called as the nested if statement in the Python programming language. In a nested if construct, you can have an if else construct inside another if else construct. Okay, agar hai, so that is called as the nested if statement. See the basic syntax of the nested if else construct may be. See here. If condition 1, okay, if condition 1 और उसका जो एल्स पार्ट है दैट विल बी हियर. इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, दिस कंडीशन इज़ ट्रू, देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. अदरवाइज अगर फॉल्स हो गया, सो फॉल्स होने के बाद द कंट्रोल विल बी डायरेक्टली गो टू द एल्स पार्ट हियर. ओके, मीन्स इफ एक्सप्रेशन 1 दैट इज कंडीशन 1 इज एग्जीक्यूटेड ट्रू हुई, तो दिस स्ट्रक्चर फॉलोड बाय इफ जिसके अंदर फिर से इफ एल्स यूज़ हुआ है, मीन्स नेस्टिंग यूज़ हुआ है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड हियर. एंड इफ द एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स, then directly jump to the else part of the if statement which is followed by the else part. Okay, so then suppose if your first condition will be true here, then this part will be executed, that is consist of if else statement. So within the if structure, this part is enclosed, that is called as the nested if statement here. So in this way you can implement the structure in many ways. So this is the overall structure of the nested if construct in case of the Python programming language. Okay, now discuss the example. See, this is the example of the nested if statement in case of Python programming language. See, this is the program. See here, var 100. So I will initialize 100 to the var variable, so it is automatically a integer type data type. Okay, then check if var is less than 200. यहाँ पर जो सबसे पहली जो कंडीशन है, var is less than 200. yes, var is less than 200. okay, so that's why this condition is true here. ट्रू हो गई तो इफ़ के साथ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, दैट विल, तो ये जो सभी के सभी जो आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट इफ स्ट्रक्चर. ओके, सो देन प्रिंट एक्सप्रेशन वैल्यू इज लेस दैन 200. आपका सबसे पहला मैसेज ये आएगा कंसोल पे, दिस विल बी योर फर्स्ट मैसेज. देन चेक if var is equal to 150. no, this condition is false because your var value is 100. it is not equal to 150. so ये पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे. देन एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स इफ var इक्वल टू 100. yes, your var is equal to 100 बिकॉज आपकी var की वैल्यू क्या है, 100. so which is 100. this is your second message on the console. so that's why this will be totally skipped because this condition will be satisfied here. ओके, देन एल्स पार्ट भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इफ कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई हुई थी, तो एल्स पार्ट का कोई भी मीनिंग नहीं है. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज द गुड बाय विल बी प्रिंटेड ऑन द मैसेज. सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ एल्स नेस्टेड स्ट्रक्चर, expression value is less than 200, then which is 100, and goodbye message will be printed on the console with the help of the Python programming language. Now check the output of the given program. See here, as this first condition is satisfied,
so this message will be printed, and if में अगर आप जाओगे so this will be printed, because again this condition will be satisfied here. This will be skip, this will be skip, and this will be printed. So expression value is less than 200. This will be your first message, which is 100, this one, and then goodbye. So this is your overall output of the given program, which implement the concept of nested if else if structure. Okay, so this is again a one important concept in case of the Python programming language. In so many programming concept, you have to implement this. So this is all about the decision making in case of the Python programming language. Now turn towards the next topic of the Python of the second unit, that is the loops in the Python. Okay, so you very well know the concept of looping. क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको रिपीटेडली अगर उसको एग्जीक्यूट करना है फॉर सम periods of time or some number of times, so you have to use or you have to implement the concept of the loop in such a cases. अगर मुझे hello world, suppose hello message, hello world message, ये अगर मुझे 10 times अगर print करना है, so without writing print statement 10 times, by using the loop structure you can easily print the hello world 10 times without writing the 10 print statement. Okay, implementing of the loop structure with the help of the implementation of the loop structure in case of the Python programming language also. Okay, so what is meant by loops, you very well know in case of C, CPP and Java, but now in Python, in general, statements are executed sequentially. The first statement in a function is executed first, followed by the second, and so on. There may be a situation when you need to execute a block of code several number of times. That is the repetition. Okay, this is also called as the repetition of the code. Okay. Programming language provides various control structure that allow for more complicated execution path here. Okay, a loop statement allows us to execute a statement or a group of statement multiple times. The following diagram illustrates the loop structure. Okay, whatever the block of code or statements, if you want to repeat so many times, so for that purpose you have to implement the concept of loop statement, which is also allowed in case of the Python programming language. See, this is the general flow diagram of the Python programming language. See here, condition is there. If this condition is satisfied, means true, then the conditional code is executed and which is in the repetition code. ओके, तो जब तक आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती रहेगी यहाँ पर, उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो कंडीशनल कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड and your code will be repeated again and again. And if this condition is false, then this looping structure will be stopped and the control will be go to the next statement which is present in your programming language. तो जो भी आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है. ओके, सो इन दिस वे, इन द जनरल थिंग, जैसे सी सी पी पी में या जावा के अंदर लूपिंग जैसे होता है पॉसिबल, वैसे ही यहाँ पे है. द ओनली डिफरेंस इज द सिंटैक्स. तो सिंटैक्स में ही चेंज हुआ है. सो हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, लेट अस डिस्कस इन डिटेल. सी, पाइथन टाइप्स ऑफ लूप. Python programming language provides following types of loops to handle looping requirement. Very first is the while loop. Repeats a statement or a group of statement while a given condition is true. मीन्स आपकी जो कंडीशंस गिवन रहती है वो अगर सेटिस्फाई होती है, मतलब ट्रू होती है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपके जो वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स रहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे, दैट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इफ़ इट इज़ फॉल्स, then your looping will be stopped. The execution of the loop will be stopped. It tests
the condition before executing a loop body. Okay, so it tests the condition before executing the loop body. Then for loop, execute a sequence of statements multiple times and abbreviates the code that manages the loops variable. Okay, same thing is there, but the declaration and definition will be different as compared to while loop. जैसे हमने CCPP में या जावा में देखा है वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, बट द थिंग इज़ कि टोटली उसके सिंटैक्स में चेंज रहेगा. एंड देन द नेस्टेड लूप्स, you can use one or more loops inside any another while, for or do while loop here. Okay, so in this way अगर आप nesting one loop के अंदर अगर दूसरा loop कोई भी use कर रहे हो, so that is called as a nesting. This also will be possible in case of the Python programming language. So while loop, for loop, nested loops, these are the basic types of the loops present in the C programming language. See, a very first is the Python while loop. A while loop statement in Python programming language repeatedly executes a target statement as long as the given condition is true. जब तक आपकी कंडीशन जो है टारगेट स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे इन केस ऑफ द while loop. So this is the basic syntax of the while loop in Python programming language. See here, while expression. See, while expression colon and then statement, just like a if statement. जैसे आपने if expression लिखा था वैसे ही सेम, just by replacing the word if by using while expression colon देना बहुत ज़रूरी है, that will be considered as a statement. Then block of statement with the same indentation और same line पे आपको use करना है, so that will be a single statement or multiple statement. So same line and indentation use करो तो वो number of blocks आपके while loops में भी consider हो जाएंगे. Okay, then here statements may be a single statement or a block of statement. The condition may be any expression and true is any non-zero value. अगर कोई भी non-zero value रहती है तो that will be true. The loop iterates while the condition is true. तो ये कंडीशन जब तक आपकी सेटिस्फाई होती रहेंगी तब तक ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे. अदरवाइज इफ इट इज़ फॉल्स देन द लूपिंग विल बी स्टॉप. व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स प्रोग्राम कंट्रोल पासेस टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोड द लूप. तो इसके बाद में जो कुछ भी स्टेटमेंट रहेंगे control will be transferred to that next location. This is the general flow diagram of the while loop in case of the Python programming language. While expression statement, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट चेक होगा, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज while लूप को फिर से यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है. दैट इज़ ऑल्सो एंट्री कंट्रोल लूप. जैसे CCPP में या जावा में भी उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी उसको एंट्री, बिकॉज कंडीशन फर्स्ट चेक. इफ इट इज़ कंडीशन ट्रू देन द कंडीशनल कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड गो अगेन फॉर द कंडीशन. तो रिपीटेडली आपकी कंडीशंस मल्टीपल टाइम चेक होगी. इफ कंडीशन सेटिस्फाइड कंडीशनल कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड. इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन दिस पार्ट विल बी स्किप्ड and directly jump to the next statement present in the Python program and end the program. So here key point of the while loop is that the loop might not ever run. When the condition is tested and the result is false, the loop body will be skipped and the first statement after the while loop will be executed. So it is general. See, this is the basic program example of the while structure in case of Python programming language. See here, count equal to 0. Then while count less than 9. ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है काउंट इक्वल टू 0, मैंने इनिशियलाइज किया है 0. सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको वाइल लूप यूज़ करना है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन बॉडी. ओके, सो वाइल काउंट लेस देन 9, देन उसके साथ में दो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं एट सेम लाइन एंड इंडेंटेशन. प्रिंट द काउंट इज, काउंट को प्रिंट किया है एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. सो सी, whenever the count is 0, the condition is checked. 0 is less than 9, yes, 0 is less than 9. Your message is first the count is 0.
ओके यहाँ पर 0 जो काउंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। देन काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू हुई आपकी 1। फिर से चेक होगी कंडीशन 1 इज़ लेस दैन 9, येस। फिर से आपका मैसेज हुआ 1 प्लस, सो यहाँ पर 2, सो अप टू 8। ओके जब 8 आएगी वैल्यू, काउंट लेस दैन 9, सो 8 इज़ लेस दैन 9, येस काउंट, तो आपका 8 भी प्रिंट होगा। देन काउंट प्लस 1, तो यहाँ पर अब ये आपकी वैल्यू हुई 9। ओके देन चेक द कंडीशन 9 लेस दैन 9, तो यहाँ पर 9 लेस दैन 9 ये जो कंडीशन है दैट विल बी फॉल्स, बिकॉज 9 इज इक्वल टू 9, नॉट 9 इज नॉट लेस दैन 9, सो दैट्स वाई इट कंडीशन बिकम्स फॉल्स होगी। यहाँ पे फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट which is present after the while condition. So goodbye message is printed on the command prompt. So in case in general looping structure जब तक आपकी ये condition satisfy होती है यहाँ पर उतने टाइम तक ये जो दो स्टेटमेंट है दैट विल बी एक्सिक्यूटेड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कोड योर आउटपुट इज काउंट, the count is 0, count is 1, up to count is 8, and the last message is goodbye, which is not a part of your while statement or while condition, so goodbye will be printed on the last location. Okay, so in this way a very first loops, that is the while loop, will be declared and implemented in such a way in case of Python programming language. See, the fundamental concept is very similar to C, CPP and Java, only the difference is syntax. Okay, so in this way you can implement the concept of while loop in case of Python programming language. In the next lecture we are going to study the concept of for loop and the nested for loop structure. Okay, so till then, thank you so much all of you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.